Now we will do the exercise and it's page 98. It's A2. Which of these statements are true? You have to fill it. आपने true और false लिखना है, उसके सामने boxes हैं, तो आपने book work करना है. Your first statement is the merchant had 3 daughters and 3 sons. Merchant की 3 बेटियां और 3 बेटे थे. Yes, it's true. So you have to put T in the box. It's B statement. The merchant stored only vegetables and fruits in his warehouse. Merchant के जो warehouse या गोदाम जो था उसमें vegetables थे, fruits थे, उसने वो store किए हुए थे. No, it's false. तो you have to put F in the box because वो dresses और ज्वेलरी का जो है वो उसकी ट्रेड करता था, vegetables और fruits की ट्रेड नहीं करता था, इसलिए ये statement false है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ब्यूटी मेड टी फॉर हर फादर बिकॉज ही वॉज थर्स्टी. ब्यूटी ने अपने अब्बू के लिए जो है वो चाय बनाई क्योंकि वो प्यासा था या उसको प्यास लगी थी. नो, इट्स फॉल्स बिकॉज ही वॉजंट थर्स्टी, ही वॉज वेरी एंड ब्यूटी फेल्ट दैट हिज फादर वॉज वेरी. ब्यूटी को ऐसे लगा कि उसका कि अब्बू जो है वो टायर्ड हैं, थके हुए हैं, इस वजह से उसने उनको टी बना के दी थी. ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आपने एफ लिखना है बॉक्स में. नेक्स्ट इज जैक अग्रीड टू गो विद हिज फादर. जैक जो है वो अपने बाप के साथ जाने के लिए तैयार था. इट्स अगेन फॉल्स बिकॉज जैक जो है वो अपने वालिद के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था. इनफैक्ट जोसेफ वॉज रेडी टू गो विद हिज फादर टू फाइंड आउट द वर्क फॉर हिज फादर फॉर हिमसेल्फ. जोसेफ जो है वो अपने बाप के साथ जाने के लिए रेडी था. सो पुट एफ इन द बॉक्स. the last one is the merchant and his father found a castle in the forest. merchant और उसके बेटे को फॉरेस्ट में, जंगल में एक कासल नजर आया. yes, it's true, so you have to put T in the box. Now it's page number 99 and it's B1. Find words in the story which have the same meanings as the following. आपने स्टोरी से जो ये जो आपके पास वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स जो हैं, मतलब सेम वर्ड्स सिनोनिम्स हैं आपके पास स्टोरी में दिए हुए हैं, आपने वो फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करने हैं, ये जो आपके पास ब्लैंक्स हैं, और ये भी बुक वर्क है आपका. योर फर्स्ट वर्ड इज पोजेसिंग, यानी कोई चीज़ आपने ऑन की, आपने ले ली, तो आपके पास वर्ड था ऑनिंग, तो OWNING ऑनिंग आपने लिखना है फर्स्ट में. देन बी स्टोर रूम. वेयर हाउस, you have the word warehouse in the story which is the synonym of storeroom, yeah, which have same meanings. Now the next word is gimmick. It means trick, TRICK, trick. And the next word is ashes. And the word related to that word in your chapter was cinders, CINDERS, cinders. Next word secure, and it means safe, SAFE, safe. And the last word is hardship, which means difficulty, DIFFICULTY, difficulty. Now turn your page, it's page 100 and it's third part, B3. See if you can add the correct prefix un or dis to the following. आपने क्या करना है, un और dis ये दो prefixes हैं आपके पास, आपने words से पहले इनको add करना है, तो they will change into new words with the new meanings. Okay. The first is happy. You have to put u and un before the word happy and it will become unhappy. The next is agree. You have to put dis and it will become disagree. Next word is please. You have to put dis before the word and it will become displease. Same like disappear, disbelieve, disallowed, disappoint, unclear, unattached, dissatisfy, dishonest, unable, unlimited, uncertain, uneducated. You have to do these all questions on your book.